हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सीपेट एजुकेशन जो आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करुले 2024 करते 2023 करते आज 2022 क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तेणु वीडियो कर मोर टे लेट हो गला कारण मोर पुअर व्रतघर थिला। व्रतघर कम टे व्यस्त रहीगली, तेणु तुम मानी समय दे पारे से मोर तुम सरी मागुचे। तेणु 2024 भल क्वेश्चन आंसर कराई, 2023 क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कराई, एबे 2022 सीपेट एजुकेशन क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर सांग मान सेयार कर। ताहले चलो वीडियोटी स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन ना 2022 कौन पढ़ते ना व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विथ द थ्योरी ऑफ नॉलेज। पिला मैंने जो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी अच्छी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तेणु मेटाफिजिक्स क्या बुझाऊँ, एपिस्टेमोलॉजी क्या बुझाऊँ एंड एक्सियोलॉजी क्या बुझे एगुड़े पूर्व भल भाव में कही। तेणु आज क्वेश्चन कौन आसी ना व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विथ थ्योरी ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स, ऑप्शन बी एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन सी एक्सियोलॉजी एंड ऑप्शन डी एथिक्स। The correct option here is epistemology. Epistemology is related with knowledge. Then the next question is who defined education as the dynamic side of a philosophy? Option A Spencer, option B John Dewey, option C John Adam and option D Ross. The correct answer here is option C John Adam. John Adam says education as the dynamic side of a philosophy. The next question is who defined education as the laboratory in which philosophical directions become concepts and tested? Option A Spencer, option B John Dewey, option C John Adam and option D Ross. Here the correct answer is option B John Dewey. Then question number 4. Which of the following believes that the physical world is the creation of a mind? Option A idealism, option B pragmatism, option C naturalism and option D realism. Here the correct answer is option A idealism. Idealism believes as the mind is real. Then the next question is who proposed the concept of negative education? पिला माने जानी थी भल भाव। ऑप्शन ए प्लाटो, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी जॉन डुई एंड ऑप्शन डी रूसो। नेगेटिव एजुकेशन किए कही ना करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रूसोंकर नेगेटिव एजुकेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलीव इन फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी pragmatism, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म एंड ऑप्शन डी रियलिज्म। Here the correct answer is option B pragmatism. Pragmatism does not believe in fixed aims of education. Then the next question is which of the following is not a pillar of education according to R.N. Tagore, Rabindranath Tagore? Option A creative self-expression, option B internationalism, option C restrictions and option D active communication with nature and man. Here the correct answer is option C restrictions. Then the next question is match the following in terms of the educational philosophy of Gandhiji as defined by M.S. Patel. A रही ना कलम ए एंड कलम बी। ऑप्शन ए रही नेचुरलिस्ट, बी रे रही आइडियलिस्ट, सी रे रही प्राग्माटिस्ट एंड कलम बी रे रही मेथड्स, सेटिंग्स एंड एम्स। तेणु ऑप्शन सब देखिए कौन ना ऑप्शन ए रही ए इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू डबल आई, सी इज इक्वल टू ट्रिपल आई। बी ऑप्शन अच्छी ए इज इक्वल टू ट्रिपल आई, बी इज इक्वल टू डबल आई एंड सी इज इक्वल टू आई। सी ऑप्शन अच्छी ए इज इक्वल टू डबल आई, बी इज इक्वल टू ट्रिपल आई एंड सी इज इक्वल टू आई। एंड डी अच्छी ए इज इक्वल टू डबल आई, बी इज इक्वल टू ट्रिपल आई एंड सी इज इक्वल टू आई। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू ट्रिपल आई। ऑप्शन बीटा हूँ करेक्ट आंसर। नेचुरालिस्ट क्या गुरुत्व देछि ना ए हूँ ट्रिपल आई, यहाँ एम सांगे सामान। बीटा हूँ डबल आई सेटिंग एंड प्राग्माटिस्ट हूँ आई मेथड्स। यहाँ करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेस्क्राइब्ड नथिंग कैन बी टॉट एज ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग?
ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी आर एन टैगोर, ऑप्शन श्री अरविंद, ऑप्शन सी श्री अरविंद एंड ऑप्शन डी जॉन डुई। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी श्री अरविंद। अरविंद कहते नथिंग कैन बी टॉट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज एन amalgama of all branches? A option A Peel, option B Ashubel, option C Skinner and option D Crow and Crow. Here the correct answer is option B Ashubel. Then the next question is in the context of development cephalocaudal refers to which of the following? From option A from downward to head, option B from head to downward, option C both and option D none of these. Here the correct answer is ऑप्शन बी फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड। जो प्रिंसिपल ऑफ आमर रही प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देयर आर टू लॉज सेफाल काउडल लॉ एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ। सेफाल काउडल लॉ फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर रु पेरीफेरी आड़ को डेवलपमेंट होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे। यहाँ जानी भल भाव तुम पढ़ाई जे पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी पोस्ट ऑपरेशनल, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल एंड ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल पीरियड। तांकर जो रही जे कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड ये जो रही सेंसरी मोटर, पोस्ट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। तेणु यही गुटिक हूँ भूल। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल पीरियड स्टेज तांकर नाही। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइंड इंटेलिजेंस as the global capacity of the individual to act purposefully, think rationally and deal effectively with the environment. Option A Whistler, option B Binney and Simon, option C Torman and option D Spearman. Here the correct answer is option A Whistler. Then the next question is which of the following component of Sankhya is based on Trigunas? Option A Purusha, option B Prakriti, option C both A and B and option D none of these. Here the correct answer is option B Prakriti. Then the next question is which of the following is based on Sapta Bhaginaya? Option A Buddhism, option B Jainism, option C Sankhya, option D Vedanta. Here the correct answer is option B, that is Jainism. Then the next question is Guilford structure of intellect is based on how many abilities? जो Guilford structure of रही इंटेलिजेंस तार केतेटा एबिलिटी रही। दैट इज ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 180 एंड ऑप्शन डी 200. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 120. ऑप्शन ए 120. Then the next question is law of frequency, recency and intensity come under which law of learning? Option A law of readiness, option B law of exercise, option C law of effect and option D all of these. Here the correct answer is option B, that is law of exercise. Then the next question is which of the following theory is also known as instrumental conditioning? Option A classical conditioning, option B operant conditioning, option C both and option D none of these, none of the above. Here the correct answer is option B, that is operant conditioning theory. Then the next question is in constructive learning teacher's role is as option A facilitator, option B knowledge provider, option C knowledge creator, option D all of these. Here the correct answer is option A facilitator. टीचर रोल हो ना फैसिलिटेट करवा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेव वाइगोट्स्की, ऑप्शन सी जेरम ब्रूनर एंड ऑप्शन डी डेविड आशुबेल. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लेव वाइगोट्स्की. वाइगोट्स्की होचंती सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी रो प्रोपाउंडर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज egocentrism is the feature of which stage of cognitive development? Option A sensory motor, option B pre-operational, option C concrete operational and option D formal operational period. तो जो cognitive development रही पियाजेंकर egocentrism को पीरियड रे ही शो करि थाए.
The correct answer here is option B, pre-operational period. Pre-operational period रे egocentrism ଆସିଥାଏ. Then the next question is, who proposed personality type theory as extrovert and introvert? जो personality theory रही है type theory trait theory रही एवं extrovert introvert कोउथिरे आसे? ऑप्शन ए क्रेस्मियर, ऑप्शन बी स्पेंजर, ऑप्शन सी सेल्डन एंड ऑप्शन डी कार्ल जंग. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कार्ल जंग. जंग को मतरे एक्सट्रोवर्ट एवं इंट्रोवर्ट डिवाइड करछन्ती. Then the next question is, Raju is frustrated with his boss at work, goes home and kicks the dog. It is an example of which of the following defense mechanism? Option A, sublimation, option B, projection, option C, displacement and option D, denial. Here the correct answer is option C, that is displacement. Then the next question is, which of the following defense mechanisms refers to satisfying an impulse with the socially acceptable substitute of object? Option A, sublimation, option B, projection, option C, displacement, option D, denial. Here the correct answer is option A, that is sublimation. Option A, sublimation. Then the next question is, how many cards were used in the TAT thematic appreciation test जोटा रही of Morgan and Murray? Option A 28, option B 29, option C 30 and option D 31. Here the correct answer is option D 31. Then the next question is, who published the first number of a Journal of Educational Sociology in 1928? Option A George Pianet, option B Auguste Comte, option C Durkheim and option D Spencer. Here the correct answer is option A George Pianet. Then the next question is, who defined social change as the pattern of a social relationships in a given setting? Option A Miller, option B Davis, option C MacIver and option C Henry. Here the correct answer is option D Henry. Option D Henry. Then the next question is, which of the following is not true in the context of social change? Option A is it is continuous, option B it is not directional, option C it is universal and option D it is both planned and unplanned. Here the correct answer is option D, it is both planned and unplanned. Then the next question is, in the adolescent stage, which of the following agents of socialization play a significant role? Option A family, option B school, option C peer group and option D community. Here the correct answer is option C peer group. Then the next question is, the gap between the development of a material and a non-material culture is called as? Option A cultural diffusion, option B cultural development, option C cultural destruction and option D cultural lag. Here the correct answer is option D, that is cultural lag. Option D cultural lag. Then the next question is, who introduced the term modernization? Option A Daniel Lerner, option B William James, option C John Dewey and option D Probable. Here the correct answer is option A Daniel Lerner. Then the next question is, who coined the term Sanskritization? Question number 32. Who coined the term Sanskritization? Option A is R.N. Tagore, option B J. Krishnamurti, option C Y. Singh and option D M.N. Srinivas. The correct answer here is option D, that is M.N. Srinivas. Then the next question is, who quoted man is born free and everywhere he is in chains? এটা बहुत इंपोर्टेंट तुमको सबुबले क्वेश्चन इंपोर्टेंट रही. ऑप्शन ए जॉन डुई, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी पेस्टालोजी एंड ऑप्शन डी जॉन लॉक. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, that is Rousseau. Man is born free and everywhere he is in chains. Option here the correct answer is option B Rousseau. Then the next question is, globalization has what kind of effects on education? Option A positive effect, option B negative effect, option C both and option D none of the above. Here the correct answer is option C,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव इम्पैक्ट रही और नेगेटिव इम्पैक्ट रही। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ atrocities act was passed in which year? Option A 1989, option B 1990, option C 1991 and option D 1992. Here the correct answer is option A, that is 1989. The next question is match the following in the context of variables of teaching. Column A and column B. Column A रे रही dependent variable, B रे रही independent variable, C रे रही intervening variable. Then column B रे रही teacher, student and teaching strategy. कोटा को variable को बुझाऊँगी। तेणु ऑप्शन सब रही देख A इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू डबल आई, सी इज इक्वल टू ट्रिपल आई। एथरे करेक्ट आंसर किए हम ना जोटा आम देखा डिपेंडेंट वेरिएबल किए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किए एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल किए। डिपेंडेंट कहले जी अन्य उपरे डिपेंड निर्भर करुच्ची, इंडिपेंडेंट कहले जी निर्भर करूना और इंटरवेनिंग कहले जी दी जनक भितर किसी व्याघात सृष्टि करुच्ची। तेणु एठी करेक्ट आंसर हम आग देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल किए। तेणु एठी करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन डी, दैट इज ए हूँ कौन ना डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किए ना हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट टीका ऊपर डिपेंड ना टीचर ऊपर डिपेंड। तापर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी हूँ किए ना बी हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम टीचर, टीचर होती इंडिपेंडेंट। इंटरवेनिंग वेरिएबल किए ना टीचिंग स्ट्राटेजी। तेणु हियर द करेक्ट आंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर और इंटरवेनिंग वेरिएबल है टीचिंग स्ट्राटेजी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फेज ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड फिक्सिंग ऑफ गोल्स? ऑप्शन ए इज प्री एक्टिव फेज, ऑप्शन बी इज इंटरएक्टिव फेज, ऑप्शन सी इज पोस्ट एक्टिव फेज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्री एक्टिव फेज। Then the next question is which of the following is not a fundamental element of a teaching model? Option A focus, option B feedback, option C social system and option D support system. Here the correct answer is option B, that is feedback. आमर फोकस रही, सोशल सिस्टम रही एंड सपोर्ट सिस्टम रही, एगुटिक ही ना, फीडबैक ही ना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप द बेसिक टीचिंग मॉडल? रॉबर्ट ग्लासर, हिल्डा टाबा, Flander and Joyce. The correct answer here is option A, that is Robert Glaser. Then the next question is which of the following is a normative teaching model? Option A Clark's general theory of teaching, option B होची Gane's hierarchical theory of teaching, option C Brunner's cognitive theory of instruction and option D all of these. Here the correct answer is option D, all of these. एगुड़ा सब होची आमर जो रही नॉर्मेटिव टीचिंग मॉडल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग इज चाइल्ड सेंटर्ड व्हेयर स्टूडेंट्स बिकम मोर एक्टिव? मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन लेवल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। Then the next question is which teaching skill refers to the change in teacher behavior to attract a pupil's attention? Option A skill of explanation, option B skill of reinforcement, option C skill of classroom management, option D skill of stimulus variation. Here the correct answer is option D, that is skill of stimulus variation. The next question is inductive teaching method proceeds from option A particular to general, option B general to particular, option C both A and B and option D none of these. Here the correct answer is option A, that is particular to general. Inductive teaching, deductive कौन ना from general to particular, एटा तार ऑपोजिट टा होची इंडक्टिव ऑपोजिट है डिडक्टिव। इंडक्टिव जाउची पर्टिकुलर रु जनरल एंड डिडक्टिव हम जनरल टू पर्टिकुलर। एटा मन रखिए, एटा नेक्स्ट परीक्षा आसी पारे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टीचिंग मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम अननोन टू नोन? दैट ऑप्शन ए एनालिटिक मेथड, ऑप्शन बी सिंथेटिक मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस।
Here the correct answer is option B, that is synthetic method. The next question is, which of the following refers to the full range of information gathered by the teacher about students' learning? Option A test, option B measurement, option C assessment, and option D evaluation. Here the correct answer is option C, that is assessment. Then the next question is, categorizing gender into male and female is an example of a dash. Nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scale. Here the correct answer is option B, that is ordinal scale. Then the next question is, which scale of a measurement is having absolute 0 point? Ko scale ro nominal, option A nominal scale, option B ordinal scale, option C interval scale, and option D ratio scale. Ko scale ro absolute 0 point achi. The correct answer is option D, that is ratio scale. Then the next question is, which evaluation is an intensive treatment to foster student learning? Foster student learning. Option A placement evaluation, option B formative evaluation, option C diagnostic evaluation, and option D summative evaluation. Here the correct answer is option B, that is formative evaluation. Then the next question is, who used formative and summative evaluation for the first time in 1967? Option A N. Grunlund, option B Michael Sheridan, option C A Anastasi, and option D R Lin. Here the correct answer is option B Michael Sheridan. The next question is, standardization is possible for which kind of a test? Option A objective type test, option B subjective type test, option C both A and B, and option D none of these. Here the correct answer is option A, that is objective type test. Then the next question is, which of the following is an example of a supply type item? Option A true false type, option B MCQ or multiple choice question, option C short answer type, option D matching type. Here the correct answer is option C, that is short answer type is a supply type question. Then the next question is, which of the following is an assessment tool based on achievement criteria? Option A portfolio, option B rubrics, option C interview, option D observation. Here the correct answer is option B, that is rubrics. Rubrics is an assessment tool based on achievement criteria. Then the next question is, which of the following is not a dimension of a blueprint? Option A instructional objectives, option D content areas, option C type of items, and option C scoring procedures. Here the correct answer is option D, that is scoring procedure. कारण जो 3 डायमेंशनल चार्ट रही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रही कंटेंट एरियाज रही एंड टाइप्स ऑफ आइटम्स रही 3टा डायमेंशन तार. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैलिडिटी इज बेस्ट सुइटेबल फॉर द अचीवमेंट टेस्ट? ऑप्शन ए फेस वैलिडिटी, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ऑप्शन सी कंटेंट वैलिडिटी, एंड ऑप्शन डी कॉन्करेंट वैलिडिटी. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. The next question is, which method of reliability is based on the division of data into odd and even groups? Option A split half, option B test retest, option C equivalent, and option D KR20. Here the correct answer is option A, that is split half method. Then the next question is, item analysis includes which of the following? Item difficulty, item discrimination, both A and B, and option D none of these. Here the correct answer is option C, that is option C both A and B. कारण आइटम एनालिसिस रे हमर कोन होता है ना आइटम डिफिकल्टी लेवल आइडेंटिफाई करा जाता है एवं आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर मध्य डिटरमिन करा जाता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच काइंड ऑफ रिसर्च इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल? एटा तमर फर्स्ट चैप्टर रही मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रे. ऑप्शन ए रही बेसिक रिसर्च, ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च, एंड ऑप्शन डी इवैल्यूएशन रिसर्च. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च रे थ्योरी एंड प्रिंसिपल गुड़ाक डेभलप करा जाता है एवं अप्लाइड रिसर्च रे सही थ्योरी एवं डेभलप प्रिंसिपल को अप्लाई ही करा जाता है.
Then the next question is, in which step of research hypotheses are tested? Option A, selection of a problem. Option B, formulation of objectives. Option C, analysis of data. And option D, reporting. Here the correct answer is option C, that is analysis of data. Then the next question is, qualitative research is based on option A, top-down approach. Option B, bottom-up approach. Option C, both A and B. And option D, none of these. Here the correct answer is option B, both bottom-up approach. Option B is bottom-up approach. Then the next question is, which research approach is based on 4 scales of measurement? Option A, quantitative research. Option B, qualitative research. Option C, both. And option D, none of these. Here the correct answer is option A, that is quantitative research. Quantitative research scales of measurement व्यवहार करा जाता है. Next question is, which research is suitable to study the cause-effect relationship? Option A, ex post facto research. Option B, experimental research. Option C, both A and B. And option D, none of these. Here the correct answer is option B, that is experimental research. Experimental research रे cause and effect relationship find out करा जाता है. Then the next question is question number 62. FPA manual of referencing refers to African Psychological Association. Option B, Atlantic Psychological Association. Option C, American Psychological Association. And option D, Association of Psychological Amenities. Here the correct answer is option C, that is American Psychological Association. Then the next question is, which of the following central tendencies is having the greatest stability? जो central tendency रही मीन मीडियन मोड तार greatest stability किए रही ना. Option A, mean. Option B, median. Option C, mode. And option D, all of these. Here the correct answer is option A, that is mean. Mean होची सबुठारु stable measure of central tendency. Then the next question is, what percentage of cases lies between -1 standard deviation and +1 standard deviation in the normal probability curve? Option A, 68.16%. Option B, 68.26%. Option C, 58.35%. And option D, 68.2% cases. Here the correct answer is option B, that is 68.26% cases. Then the next question is, what is the kurtosis value of a normal distribution? Option A, 0.262. Option B, 0.263. Option C, 0.264. And option D, 0.265. Here the correct answer is option B, that is 0.263. Then the next question is, when did RT Act come into force in India? RT Act कले Right to Education Act केबे इंडिया रे आसीतिला? 1st April. Option A, 1st April 2010. Option B, 1st April 2011. Option C, 26th August 2009. And option D, 26th August 2020. Here the correct answer is option A, that is 1st April 2010. RT Act 2009 implement होता किंतु came into force in 1st April 2010. Then the next question is, which of the following are recommended for the establishment of a diet? Diet कले District Institute of Education and Technology. Option A, Indian Education Commission 1964. Option B, University Education Commission 1948. Option C, National Policy on Education 1968. And National Policy on Education 1986. Here the correct answer is option D, that is National Policy on Education 1986. Then the next question is, in which type of a counseling do both counselor and counselee get an equal scope? The option A, directive counseling. Option B, non-directive counseling. Option C, eclectic counseling. And option D, all of these. Here the correct answer is option C, that is eclectic counseling. Then the next question is, which of the following is the feature of the TABA model of curriculum development? It is an inductive model. Option B, it is a grassroots model. Option C, it is a teacher approach. And option D, all of these. Here the correct answer is option A, that is it is an inductive model.
Then the next question is, and last question is, which learning disability affects reading and related language based processing skills? Option A dyslexia, option B dysgraphia, option C dyscalculia, and option D non-verbal learning disability. Here the correct answer is option A dyslexia. ଏଠି ଏସ୍ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ଡାଇସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଡାଇସ୍ଲେକ୍ସିଆ କହିଲେ ଡାଇସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜର୍ଡର। ଡାଇସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜର୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ରିଡ଼ିଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଉ ଦେ ରିଲେଟ୍ ଟୁ ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ତାପରେ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରେନ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ କହିଲେ ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜର୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ପର୍ସନ୍ସ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବେସ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଡିଜର୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।